Good evening and warm welcome to all of you on behalf of Ahmedabad Management Association. Friends, today's topic is very hot and very interesting. When at the 3:30 the market closed, then everybody is watching how much is the Sensex down, Sensex up. ક્રૂડ કેટલું ડાઉન ગયું, ક્રૂડ કેટલું અપ, ડોલર કેટલો ડાઉન, ડોલર કેટલો અપ ગયો એના માટે. So today we have one of the expert faculty with us, Mr. Ashish Shah, who is the founder, promoter and managing director of Wealth First Portfolio Managers Limited. This firm is a wellspring of knowledge with more than 30 years of rich experience in finance and investment management. He ventured into financial advisory right after the Harshad Mehta scam in 1992. Coming from an engineering background, he had to learn the ropes about this business on his own. From the very beginning, he is known for his unconventional approach among his peers and has built a hugely successful business by daring to be different. He highly believes in absolute transparency for the clients and complete client satisfaction. He is not afraid to say no to a client's decision if it is not in the client's interest. He has seen the market in all its phases. Due to this, he has been known that sometimes not doing anything is the best decision one can take. So before taking much of your time, I hand over to Mr. Ashish Shah. Sir, please. Hello, good evening. Giriraj, Okay. let us have a Sorry. warm. I welcome you, sir. Thank you. I wish you the warm, many happy days of the day. Is it birthday? Thank you, sir. And he's here, see, he's so passionate about AM and activity. The family is waiting for the good dinner and he's here to, my speech, very boring speech. Okay. See, friends, I think what I'm going to talk is not exciting. It is not exciting. I'm talking a little bit boring. But boring makes your life very, very stressless and you can say you can enjoy the life. Let's start it. Will you make it exciting with Q&A or in between also you can ask me the questions. See, the idea is 360 degree. 360 degree, when we live in this country, I believe that India is one of the most transparent country as far as the financial things are concerned. Lot of times we say that US, there is a pension, there is a Medicare, Norway, everything is taken care by government. India, we have nothing. Let me tell you how I look at it. Because today the biggest question is the pension globally, even in US. There's 7.5% whatever they deduct. Nobody knows what it is happening to it. Now in India, when I'm born as an Indian citizen, I know that government is not going to support me anything. First, clarity. I have to live my life on my own. My family, I have to take protection. I have to create my own money for the end of, till my end of life. The first, the clarity is there. Now, how to sail or navigate our life without much problem? First and foremost, when we start earning money, what we need is a protection. Okay, the next. See, my subject is 360 degree. That's why I'll tell you what person should have done or we should do at any age. I think we have a lot of young boys and girls also here. See, there are three things. Risk management, financial freedom, and stress-free life. What is risk management?
The first thing, suppose a person starts earning and raise the family, the breadwinner, suppose anything happens to him or her, then the family is in problem financially. The replacement, economical replacement cost of the breadwinner, you should have a risk management, and that is nothing but a term plan. Everybody should have a good term plan at the starting of the career. I will mail the presentation, everybody. You are allowed to take, but we will mail the presentation also. It is very simple, few slides. So you should have a term plan in your life. And as you grow in your life, your family increases, your wealth increases, you can increase or decrease your term plan premium like that. Second, whatever saving you do in your life, one bad illness of a family member can eat all your savings of couple of years. So you should have mediclaim in your life which manages your any illness or any unforeseen circumstances because of the hospital. Another is a personal accident, because anything happens for accident. See, these three are risk management tools. Now the problem comes, suppose we live for 60 years, 85 years, what happens? If I die, my wife will get 10 crore, 5 crore, 3 crore, the family is in no problem. They will happy, they will forget me after 15 days. Am I right or wrong? Because there is money. And they will bless also, okay, Papa was a fantastic financial planner. He did good for us. And second thing, what happens? Your expense also goes about 25%. After the 4 of family, 1 person is heavily aboard, your expense also goes down. So it will take care of your financial things, okay? But if you leave, now the problem in India, see, there was a study in 2005, I attended one program with Mr. Chidambaram. Somebody asked him, Wall Senator is a very intelligent person, I can say. The biggest problem in India is facing is a retirement planning, that is pension. Because your life is going up. Previously we were only 70 years, most of the people were to die. Average age was 70 years. You work till the age of 60, 62. So only 8 years you have to live without money. Now today, 58, 60, you are so much drained out, your company will get rid of you, or you also don't want to work fully, and you live till 85 years. Now the problem, what are the problems? After 70, you need knee replacement, you have to change your stand, you have to go for a lot of other things which was not happening 15, 20, 30 years before. So all these expenses also you have to take care, as well as your living expenses. Your aspiration has gone up, there was no mobile, there was no OTT, all these expenses are fixed expense. So the biggest thing, if somebody asks me what is the biggest goal of your life, is a retirement corpus. People have to think about the retirement. Friends, if we don't have money now, we need money. Let us be very honest. Who doesn't want money in this room? Tell me first. Who doesn't want to make money? Okay, then you are allowed to sit. If you don't want to make money, I think there are other classes. See, you require a good corpus to have your financial freedom and your retired life or any life in this country, because nobody is going to help you. So one of the goal of your life should be a retirement planning. Second is your children education. See, there is a lot of anomaly in this goal setting also. There are a lot of goals in life, foreign tour, car, bigger car, something like that. Because when my next generation, whatever money I give, if they are not educated, they will blew the money. The best thing is we should prepare our children with a proper education which is always permanent. For that we have to plan expenses. Then third is your home, obviously. Still there is people want to own the home. And fourth is other thing, children's marriage. I think these are the 4 major goals of anybody's life. Now what is the problem has happened? What are the assets we are having? Can anybody, what are the assets? Which type of asset? Can anybody say? Fixed asset. Financial assets. Oh, liquid financial में लगभग आ जाएगा. Then IP. What you want to say? IP is an asset. Goodwill, USP, IP. IP is a big asset. Let me tell you, it's going to be the future asset class. Digital assets, your Twitter account, suppose you have 10 lakhs followers, you are getting money, YouTube account, you are getting money. Financial assets which we'll talk.
See, financial asset means bonds, fixed deposit, mutual fund, stocks, AIF, PMS, okay? Physical means whatever land, real, commercial premises, something. What is unknown assets? Can you tell me? Sorry? Perfect. We don't know who is going to give me. See, why I have written this slide I added today. Next week we are having one person, who is an expert on inheritance planning. He told me these are the assets, out of that one he wrote unknown assets. How to manage unknown assets. Anyway, see that the process is first you create wealth, then you transfer the wealth to next generation. For that there are a lot of good people available in the market. We can take their guidance and all how to transfer the asset to your next generation. We'll have one session, sir. Ek baar. Dave Sahib, inheritance planning, we can have session here. Yes, we can. Wealth creation, to half an hour they will know. How to transfer to next generation, we can have one session. It's a very interesting session. So many problems are there for transferring the wealth. This is what I said previously. Age of 20, I started earning at 21. My friend Anand also is here. We started earning at 21. Am I right, Anand? We studied together in LD engineering. We both started working at 21. And 70 पे तो टपक जाते थे. Problem is, at till 25 nobody works, get good money, good salary. 55 people are drain out, burn out, whatever it is. And 85 तक जीने का है. Second thing, nuclear family. पहले joint family थे. तो कोई भी आदमी इधर उधर होता था, उसका family, they were taking care of the younger brother or the weaker person of the family and all. No pension. Even government has stopped pension. The new pension scheme is a big problem. You know, this election agenda, one of the biggest agenda is the fixed pension. You might have heard, I think last which election, Himachal or somebody has assured the fixed pension and they won the election. We can talk for pension for n number of hours. High medical cost, and Mediclaim doesn't cover everything. We all know. Okay? We don't have no Medicare, and high cost of living. Cost of living is going up every day. Our aspirations are going up. So all these things relate to problem. Now let us talk of solution. The biggest enemy, Rakshas bolo, jo bhi bolo, is this in life. Inflation. Today everybody talks of inflation. See, we need inflation and we don't need also inflation. Like 2001 to 4, you go back and you go back to 2014 to 17, we had a very low inflation. But things were not good. We need 3 to 4% inflation. We don't need 6 to 7. Today we are at 6 to 8% inflation regime. 6 to sarkar bata diya, 8-9% inflation hai. Inflation eats away your purchasing power. Suppose whatever money you save and you don't beat the inflation, you will have a pauper life. The biggest problem in India, traditionally in my generation, has been a high inflation or a 6 to 7% inflation country. See, these are numbers of inflation from 2000 to 2021. Average India inflation is 6. मतलब 6% जब आप कमाएंगे ना तभी तो आपका प्रोटेक्ट होता है वो कैपिटल, वो भी आफ्टर टैक्स. सी मैंने वो जानबूझ के टैक्स नहीं लगाया, सेकंड राक्षस, because at least we need to pay, everybody pays at least 25, 30, 35% tax. So you earn money, you spend money, you save money, you pay the tax, and then you pay the inflation, and then you have to plan for post 60. Are we clear? Simply समझो बड़े simple है ना? That is the problem. Now what is the solution? It means I do beat inflation first. The answer is, whatever I do, first I do save money. And secondly, I do saving in such a manner that I do beat the inflation. My first target. See, in my experience, most of the people do not know what should be the return out of my investment. You tell me, what is the expected return from real estate? Can anybody say number? 16 to 8. Chalo, there are three. One is a apartment.
You buy an apartment for investment, not for use. You buy a barren land, kachi jamin. Very few people does. I am not able to do, but and third is the commercial assets. And there are three assets where you can invest. What will be the expected return for 10, 15-year horizon? Let us go to a longer period. 15%. 1.5. A real home. I have calculated from Ahmedabad and big cities of flats, it is 5 to 6. 5. Flats 5 to 6, I think you are bullseye. Kacha jamin maybe 10, 11. Trading भूल जाओ, लिया बेचा, long investor, we are investors. Since 2008 to 2022, as my experience when I started investment in real estate, with a very small one shop and one commercial and one residential property. Average return. Is 14, 15. Good. A good time. It means not more than 15. Yeah. Anybody here to think of 15 in real estate? We don't expect more than 15. And most of the time it is 6 to 9. Correct? Now what is the other asset class? Gold. 8%. 7-8%. Max. Doesn't beat inflation. It gives only liquidity. Gold gives you liquidity. And safety. कि मेरे घर में gold है. बेच के लड़के को पढ़ाऊंगा. बेटी की शादी में gold पड़ा है. चिंता मत करो. Something like that. Nobody sells gold. Huh? I have not sold a lot of jewelers are my client. कि भाई किसी ने gold बेचा और लड़के को अमेरिका भेजा, बोला किसी ने नहीं भेजा है. वो gold लाते हैं और ज्वेलरी बनाते हैं. वो ज्वेलरी बेच के दूसरी ज्वेलरी बनाते हैं. Anyway, gold. What is the third? Go to financial assets. Now let me tell you, financial assets, there are two parts, according to me. One is safe, second is unsafe. Now what is safe? मेरे 100 के 100 वापिस आने चाहिए. That is safe. Rule number 1. SLTR क्या है? मानसी, SLTR क्या है? मेरे पैसे वापिस आने चाहिए. दूसरा लिक्विडिटी, मेरे तो लिक्विड है कि नहीं है. Like FD is liquid, bond is liquid, mutual fund is liquid. Certain things are not liquid. Third is what is the tax? See, very loosely we say कि मेरे पैसे 9% पे लगा दिए मैंने. But you are a 33% tax, you get only 6. We don't beat inflation. Then expense. कि भाई इन्वेस्टमेंट में मेरा ब्रोकरेज जाएगा, मेरा मैनेजमेंट फी जाएगा, मेरा एग्जिट लोन लगेगा, नहीं लगेगा, that is expense. See, you do these 4 things, and then you come is a return. 99% time, today's my lesson number 1 to everybody, in a fixed income market, never think of return. Return is a byproduct of all these 4 determinants. Always we think of return and go and compromise with safety and do all the scams of the world. CRB, NACL, ILFS preference, सब स्कैम अपने को पता है. कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी पे नहीं है. मेरे को तो 12% रिटर्न चाहिए भैया. 12 के नीचे मैं नहीं रख सकता हूँ. तू क्या बताता है? मेरे पास NACL है. वो बदला होता था ना कमोडिटी में 5 लाख 15% पे एवरी 15 डेज ऊपर. सर बैठे बैठे 15% कितने दिन मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता है. जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन. नाउ व्हाट शुड योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इन फिक्स इनकम? इन्फ्लेशन से 1% ज्यादा. सिंपल. Then you feel lucky. Let me tell you, let me complete this later. If you get 1% more than inflation, and that also after tax, it's a gold. Globally आप देखो, why America has the lesser interest rate, Europe has 2%, 1%, Switzerland has ज़्यादा, because there is no inflation. जैसा in America inflation has come up, the interest has gone up to 3.7. Inflation से 1% ज़्यादा should your expectation if you get bite. Don't chase more than that, because globally investors loses much more money in a fixed income market than the equity market. Let me tell you. The history and the reality, because in a fixed income, either you get your money or you don't get your money. In a equity, recent corporate debacle, 50% money still available. Suppose you have bought at one of the top price of the stock. Today also, after so many problems, also 50% money is on the table. पर उसके बॉन्ड में प्रॉब्लम. आप देखो, the problem starts with the bonds of the company, not with the equity of the company. See, we are very reasonably good in a fixed income market. That is our main forte. It is by experience.
we should be very, very clear in a fixed income market. Because आप लोग खुद का देखना घर पे जाके कि your 70% money is invested into fixed income market. मैं देखे बिना बोलता हूँ. Because Reserve Bank data speaks कि average Indian invests 85% to fixed income market. Everybody will be excited with equity market. We will go after this. But how much money we invest in equity? Hardly 10-15% of our assets. Am I right? Does anybody 100% equity investment except home? Because the system is made in such a manner, as you start earning, एक अपना पप्पा का LIC एजेंट आके खड़ा हो जाएगा कि भाई तेरा 30 साल का पॉलिसी लेना पड़ेगा. इट इज फिक्स इनकम 6%. शादी होएगा तो वो दूसरी पॉलिसी टिकाएगा आपको. सैलरी में रह जाएगा, बोनस आएगा तो पापा बोलेगा भाई पीपीएफ भरना चालू कर, 7.5%, 8% टैक्स फ्री है. ठीक है, ऐसे ही होता है ना. गवर्नमेंट अपनी कंपनी में पीएफ कटता है, कंपनी भी पीएफ डालती है तो फिक्स इनकम है. बाद में हमने घर ले लिया 35 की साल पे बड़ा 60% वाला. देखो आप लाइफ में all your investments are not more than 7% return. During you buy jewelry, शादी है, एनिवर्सरी है, लड़की आई है, not a single investment. You think everybody going home, what you did in your last 25, 30, whatever age you are having. You invested everything less than 7% return. We can never become rich. और अपना प्रोग्राम रिच बनाने का है. बरोबर છે કે નહીં મને કો આપણે બધું 7% જ રોક્યું છે ને. Don't be shy because the global study speaks about it. Most of the people start in how do we think? See, it's a behavioral science. Okay, let me first make my life safe. Safe is PPF का 1 करोड़ का बैलेंस, एफडी के 50 लाख का बैलेंस, उसको हम सेफ मानते हैं. Then I will go to equity and take the risk. Understand? See, the human mind is wired in such a manner that let me first have safety net around me and then let me try go for the unsafe investment which is equity. I show you one slide which will clarify everything. See, there are two examples with numbers. Everybody has understood power of compounding. I think in the 5th standard we all on Chakravrti Vyaj, Kagar. Power of compounding. Am I right? Everybody knows it. And everybody knows that Warren Buffett says the 8th wonder of the world. But we don't use it. Only thing we use for 6% return. See, PPF is 6% compounding. See, this was the interest rate of last 20 years. Average return is 7%. This is a beautiful slide. 25-year-old person invest 10,000 annually for 10 years. Presentation will mail to everybody. Please give your email IDs. Means you are investing 120,000 rupees a year and for 10 12 lakh रुपया अपने खिस्से से गया. ठीक है? It's a very possible number. That money at the age of 60 you want to retire. That money is 33 lakhs. Now somebody starts, is attending class today after so many years and start investing. He invests at the age of 35, 10,000 rupees annually for another 25 years till the age of 60. His amount is only 15 lakhs. This is power of compounding. Only at 12% CAGR. At the age of 25, you just invest for 10 years, you stop investing and forget that money to grow at 12%. age બીજોનો કલીગ 35 ની એજે ઇન્વેસ્ટ કરે છે 60 વર્ષ સુધી સેમ એમાઉન્ટ 10,000 મહિને એની એમાઉન્ટ 15 લાખ થાય. Nothing but power. It will be early you start is better. Smaller amount but at early stage and a good return of compounding is the answer. The answer is you start early, you start maybe small amount, any amount, but start at a reasonable power. Means 14%, 15%, 12% return. Now what is the product? Whatever investment we had seen, now the
interesting subject starts. આપણે ગોલ્ડ જોયું, રિયલ એસ્ટેટ જોયું, ફિક્સ ઇન્કમ જોયું, એ સિવાય આઈપી જાત જાતની એસેટ, બિટકોઇન, વી ડોન્ટ ટોક બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ ટુ એવરીબડી. કોમોડિટી, everything is around 7. All everybody is agree with me? Now let us go to equity. Now equity, you can do IPO, you can buy direct stocks, you can buy a mutual fund, you can buy a portfolio management scheme or AIF. Buying stock directly is you own your brain or your friend's brain or a broker's brain. Other three are professional brains. Why don't we invest in equity? How people invest in equity? May I know? કેટલા લોકો પૈસા નાખે ઇક્વિટી? કોઈ પણ રીતે મેં કીધું એમાં ભલે ₹1 નાખે, અરે વાહ, આઈ એમ હેપી. So many. How people trades? Only 2. 3 every day. Good. But only 3 people. F&O? 2, 3, 4, 5. Good. All these things are good as far as you make money after tax. Correct? Now, why we are scared of equity? Can we tell us? Huh? Correct? It is not fixed income, fixed nothing. મારા ₹100 200 ક્યારે થશે કે 50 થશે મને ખબર નથી. Am I right? Correct. બીજું second? No waiting period, like patience. That is our problem. See, there are 2 things. It is we and what is there is structural problem. Equity or structure is that it doesn't give you guaranteed return. It doesn't give you even guarantee of capital. That is a class, asset class, no nomenclature. People don't know about the basic investment mentality about investing in the stock market. Correct. And they don't have they don't invest extra money. They just use routine money to invest in that, and they try to make money from that. That's the biggest issue. Superb. I'll tell you, there are 5 rules. તમે બધા જ કીધા, મેં લખેલા છે. Don't borrow and invest. See what is equity market? What is NSE says? A capital market. There is a fixed income debt market, there is a capital market. Capital market is મૂડી, ગુજરાતીમાં મૂડી. કોઈ જરા ઉધારની મૂડી ના લેવાય અને રોકાય. Because ઉધાર money, your interest is fixed return. તમારે આપવાના છે 12%. And here you don't have guarantee of return or even capital. So these are wrong arbitrage. You should never do this. 2, you do not put all investment into one sector. Like Y2K, 2000 Mandi happened only in technology stocks. But suppose you're Larsen Tobro, Reliance, you have made a lot of money. Don't put in one stock or don't put all money into one sector. Third, same technology stock, suppose you have invested for 5 years horizon or you have made money today. Don't put all the money, suppose તમારે 10 લાખ રૂપિયા એક વર્ષમાં ઇક્વિટીમાં નાખવા છે મારે, તો સિલેક્ટ 10-15 stocks જાતે કરવું હોય તો select 1 or 2 mutual funds. Don't put money in one day, put money into 3-4-5 months, average buying. See, equity knows you issues with it, but once you have control on your buying, after you don't have any control. See, suppose I bought XYZ share on 16th of January. On 20th, I was skyrocketed. It has become 20% return, but 25th, everything collapsed. Once I buy, then I don't have control. So what was my control? I should not have bought. Or I bought only half of the shares, or 1/3 of the shares. 4th, see, these 2 are the most important behavioral issues. Invest which money which you don't need for 3 years. Because most of the time, suppose you are a bad timer, then also within 3 years you get your capital back. The market generally 3 years it gives your capital back. If you have not done any penny investment, you have not done any satta investment, you will get your capital. That's the history. And the last, you have not borrowed money, you have spread out the investment in 6 months, you have invested into 5-7 sectors, that money is for 3 years.
it everything happened in January 20. Suppose you go back to August 20 in this class I have taken. August, September, October, November, December, invest 10 lakhs rupees, 50 lakhs ho gaya. And March 20th, it has become 35 lakhs. Reality, I'm immediate past tense. 3 साल पहले. Correct? Yes, सामान आ गया तो सारू हो तू. This class became expensive. You should be worried, don't worry if the market drops by 30%. Wait for 3 years. Today that money is double. Nifty itself is 12 ka 18. See, if you follow these 5 rules, generally you will not make less than 13-14% return. You are one of the worst investor also, but you will get 12-13-14% return. And only government also is so grateful to us that they charge only 10% tax. वो 0 था, वो भूल जाओ, अभी 10 भी अच्छा लगता है अपने को. So you tell me one thing. Suppose somebody is investing in real estate. I am not against real estate. I am not against any fixed income. Real estate, my tax is 22%. Bonds, it is 30% most of the time. Here is only 10%. It means I have to make 20% extra return if I have to beat the asset class. Sir, 10 साल आप नहीं बीट कर सकते हो कोई asset class को 20% से. कभी बीट नहीं कर सकते हो. Post tax return देखने का है अपने को. Nobody understands this taxation. Because most of we don't want to pay tax. That is again a human wire. कि अपने को कितना गुना होता है दिखा, tax base छोड़ो. That's the way we talk. So equity is only 10% tax. If you do this, I think you will never lose money. And now how much money we can make? Or some of my client has made. See, what next slide, I think it is in everybody's paper. It's very interesting. आप ये ना PPF. I am not against PPF rule number. I just comparison के लिए रखा है. That this is a 25 years of interest history, and these are 25 years of equity history. Disclaimer: I am not against PPF. It has to be there, but I am just comparison sake I had given. Okay, everybody does this. जरा देखो इसमें, very interesting. Read for a minute. आप इधर नहीं कर इधर हो. Since 96, there is no sacrosanct of 96. Huh? The data is from 96 with me, that's why. Somebody is investing 70,000 to PPF because PPF was the upper cap और 12% ब्याज था. The same day, somebody invests into equity market. Basically, if the person was earning 2.5 lakh rupees on those days, he wants to save tax. So somebody invests to PPF, other one invests to equity market. Diversified portfolio, जो आपने rules 5 rules है उसमें से. Both does the same thing for 26 years. Your PP, 26 lakhs rupees your outflow from your pocket. Your PPF is 80 lakhs. It is a fantastic amount. 80 lakhs एक नंबर के 60% ब्याज 5.5 लाख का पेंशन हो गया आपका लाइफ टाइम. But equity market is 5 crore 90 lakhs. 6 करोड़ रुपया हम रीच हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? Just tell me. एक नंबर क्या है और 10% ही टैक्स है, वो भी 2018 के ऊपर की वैल्यू का. 6 crore in your bank account is a rich or not? What you did? Nothing. Doing nothing you make money. It is our motto. I think your introduction, to make money, let me tell you, to become rich, you need to do very few things in your life. You read, you understand, you talk, but you do very few. I tell all my friends and clients, you talk everything, you discuss, do very few things in life. The problem यहीं पे है, again human behavioral. सर 6 करोड़ रुपया आई थिंक बहुत कम लोगों के पास है हो, एक नंबर के, और वो भी लिक्विड. 3 दिन में पैसे आते हैं, 2 दिन में भी तो T+2 हो गया.
ये बिल्कुल सही नंबर है। और मेरे आई हैव लाइव एग्जांपल्स। 6 करोड़ नहीं बने बेचारे के, 3-4 मतलब 10,000 किसी ने डाला था इतने साल, 25,000 डाला था, कम पैसे बने, बट है जस्ट डूइंग नथिंग इन इंडिया। तो भाई वी आर नॉट डूइंग, चलो हम क्यों नहीं करते हैं? प्लीज करेक्ट। नहीं, अवेयरनेस तो आज आ गई आपको, ईमेल भी मैं कर दूंगा, यू कैन आस्क गर्ल्स ऑल्सो एनी क्वेश्चंस। तो ये जो प्रोग्राम कर रहा हूं ना, आई एम नॉट जोकिंग, 2000 की साल हुई ना तब से ये मेरी स्लाइड है। एवरी ईयर आई एड 1 लाइन। 2000 के साल में मुझे ये बताते कि आशीष भाई 90s में मार्केट बहुत नीची थी इसलिए इतना रिटर्न बना। अभी क्या? आज भी यही क्वेश्चन आप मुझे पूछेंगे, ये तो पुरानी बात है आशीष, ये क्या अभी क्या? अभी तो मार्केट 60,000 हो गई, निफ्टी 18,000 हो गई, अपनी क्या? ये मैं 4,000 से ही आंसर दे रहा हूं। अवेयर तो कर दिया मैंने, कॉन्फिडेंस नहीं है। जमीन में जो कॉन्फिडेंस है ना, गोल्ड में कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने को। कुछ नहीं है रूल्स इसमें सर, क्या है? क्यों? नो नो नो, जमीन में बहुत प्रॉब्लम है, जंत्री नहीं आ गई, दलाली देनी पड़ती है लेने देने में, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं, जमीन के पैसे आते ही नहीं है 3 दिन में, कभी आते हैं? इसमें जरूरत ही नहीं, पैसा बनने में जरूरत ही नहीं इसमें। इट इज द मोस्ट, लेट मी टेल यू, अवर एनएसई और वॉट एवर सिस्टम जनरेटेड इन दिस मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इन द वर्ल्ड। करेक्ट। मेन प्रॉब्लम इज कि वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द मार्केट बिकॉज वी रीड टू मच अबाउट मार्केट। देखो एक वो स्लाइड मैंने गंवा दिया, इसमें बताता हूँ, ये पूरी जर्नी मार्केट की। हाँ ये है, देखो 2000 से 2020 की कितनी इवेंटें आ गई, ईरान वॉर, 2-3 गवर्नमेंट चेंज हो गई, सब कुछ आ गया। फिर ये अपनी निफ्टी 1,000 वाली यार 18,000 रुपये। अब इंटरेस्ट रेट, कोई मुझे पता इंटरेस्ट राशि भी बढ़ रहे, अभी क्या होएगा? बोला 13% इंटरेस्ट था यार 2013 में, इंटरेस्ट वेंट अप बाय 2% इन अ डे, फिर भी ग्रू। सी लेट मी टेल यू हाउ आई लुक एट इट। Whatever this number has shown, that is 20%, around 19% CAGR, it is nothing but India's growth story. It is nothing but India's growth story. See, 91-92, when we got the first dose of liberalization, and you can say real, the new world has started. What happens? See, our GDP, all the stock companies are generally service industry and manufacturing. Your GDP grew by 7.5%, and your inflation was 7% average. तो कंट्री खुद ही 15% पे ग्रो हुई है लास्ट 30 साल में। कंट्री इटसेल्फ ग्रो नॉमिनल ग्रोथ ऑफ 15%। वो 15% कब आएगा ग्रोथ? क्या वेन द टॉप कंपनीज ग्रोज बाय 20-22%, और पीछे वाली कंपनी 10-12% पे ग्रो होती है, तो ऊपर वाले को 20-22 जाना ही है। तो बजाज ऑटो हैज टू ग्रो, हीरो मोटर हैज टू ग्रो बाय 20%। So simple rule, if a stock price generally follows the growth of the company's profit, तो ये और कुछ नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। If you really want to participate in Indian growth story, this is the only way to make money out of it. We don't have trust in our own country. Tell me, India will grow or not? Grow or not? Percentage भूल जाओ, हाँ या ना? Will we grow better than other country? Everybody is confident, seriously? मैं कोई भक्त नहीं हूँ, हम तो पैसा बना, बिल्कुल भक्त नहीं हूँ किसी का। Are we confident about that this country will grow? तो then why we are worrying? सबको पूछो आशीष कितना टर्नओवर बढ़ता है आपका, कितना साल आपकी करियर में कितना बढ़ गया सर एनएसई का, कितना गुना हो गया आपको पता ही भी नहीं, गिन भी नहीं सकते हो अभी तो आप। आशीष भाई इज द हेड ऑफ एनएसई अभी, तो पूछो ना, तो फिर क्यों हम घबराते हैं? इतना T+2 में T+1 में पैसे देते हैं अपने को, पूरी ट्रेड गारंटी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए, फ्रॉड नहीं हुए इतने बड़े मार्केट में। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट एल्स वी नीड? बस 6 करोड़ रुपया कम नहीं है ना तो और नहीं, मुझे लग रहा है कम दिखता है सबको।
And what you did? Nothing. You follow a discipline. Discipline number one, you invest in a regular manner, you invest to diversified portfolio and stay for longer period. अभी बताओ प्रॉब्लम क्या है? Because this is my business. प्रॉब्लम येलो लाइन में है. येलो लाइन में सबको नहीं दिखेगा तो बताता हूं. तो मनी हैज बिकम टू अराउंड 61 crore 2 lakhs. कोई आदमी वही टाइम में ये सुन के आया, पैसा लगाया 1 लाख उसने, तो उसका दूसरे साल होगा 66,000. 34% लॉस है लेमन ब्रदर्स. तो लाइफ में वापस नहीं आएगा. आपने बोला अवेयरनेस तो है, पर आने के बाद लॉस हो गया. But the guy has stayed on the money. That one has become what? 5 today. If you are the worst investor also, your money is 5 times in what? 13 years. दूसरा झटका लगा आपको कोविड के टाइम कि आपने 3 करोड़ 81 लाख देखा था, उसकी वैल्यू हो गई 2 करोड़ 58 लाख एक साल में. पर 381 is today again 545 in 3 years. अपने को है, see, you know, I always say one sentence, in a fixed income market, समझो, we want equity returns. And in equity market, we want capital guarantee. दो नहीं हो सकता है. ये अच्छा नहीं, 12-13% अपने को फिक्स इनकम में चाहिए. फिक्स 12% बोल मैं करोड़ रुपया दे देता हूँ. That's the language we use. 12% is equity return. पर आपको फिक्स चाहिए, तो वो कौन में ना जाता है आपके पास, स्कीम लेके, योजना लेके, बिटकॉइन लेके. इक्विटी मार्केट नहीं आ रही है. आशीष 100 का 50 नहीं होना चाहिए, 100 का 100 रहना चाहिए. मैं तो 1 करोड़ देता हूँ. Nobody guarantees. But if you do this, this is the money. Now last. आपको लगेगा ये 2023 की कहानी है, ये पुरानी बात है तो बोल के चले गए. वन मोर स्लाइड, लास्ट स्लाइड. वो क्वेश्चन का मैं अभी से आंसर दे देता हूं. एनी डे इज अ गुड डे. क्या नहीं होती है? हाँ, आई थिंक दिस ऑल्सो इज विद एवरीबडी. आई हैव डन वन सिंपल एनालिसिस. I am not favor or against. For simplicity, 93 to today, almost, whichever mutual fund has come up as a new fund, diversified fund होना चाहिए. 10 रुपये पे NAV आती है, बस आपको समझाने के लिए रखा है. ऐसा मेरा फेवरेट कोई नहीं है, सब कंपनी के हैं. सब 93 में लेक्चर सुना होता, 96 में 2000, तो कितना रिटर्न आपका है वो देख लो आप. Any day is a good day if you are a long term investor. I want to tell you. आप देख लो, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट 2 इंस्टेंस इज नॉट लेस देन 12-13%. यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्स इजीली विद लिक्विडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो लेट अस ट्राई टू बिकम करोड़पतिस. What is Warren Buffett's return? His portfolio? 20% of 1951 to today. So our friend has given from 96 to today 20% return in India. And अब तो इंडिया में रहने वाले, why should we think of dollar return? If we get the Warren Buffett returns without doing anything, so what we want? Now, another question to the people, what we want? I will learn from you. 20 से ज्यादा कंसिस्टेंट 20 साल का रिटर्न बहुत बड़ी बात है, आपके सामने है. दैट्स द एंड ऑफ इट टू बिकम रिच. भाई काफी चीज. एनीथिंग लेट अस हैव क्वेश्चंस. इधर आपको मेरा लेक्चर गप लगता है और यू पीपल आर शॉक्ड. Thank you. And your friends, we have Mr. Ashish Goel, who is a Vice President Business Development from NSE. Welcome, Ashish bhai, to AMA.
Please. Yeah, few words from Ashish bhai, please. What is your equity There are two Ashish here. हम दोनों आशीष ही हैं नहीं, आप मुझे बता रहा हूँ नहीं नहीं पूछ रही है आप भी एनएससी के हो सर यू आर इक्वली अब बताइए ना आप बोलिए आपका जो पर्सनल एसेट्स हैं उसमें इक्विटी डेट कितना I will answer a good question. See, a lot of people ask me कि what should be asset allocation. मैंने वो जानबूझ के लिए वो थोड़ा बोरिंग और था कोई 60-40 होना चाहिए वो कायोसकी की चौपड़ी पे जितनी आप ये जितना डेट रखो बाकी का इक्विटी रखो. See, there is one is a scientific which you require what is your cash flow and all. It is pretty complicated. You have to study it. Second is very rash answer. वो दो आंसर मैं देता हूँ. दो में से एक मेरा है. फर्स्ट थिंग कोविड ने सिखाया कि भाई कुछ पैसे होने चाहिए बैंक में. खराब दिन आ सकता है लिक्विडिटी कुछ भी स्क्वीज हो सकती है. तो वन इज के आपका 3 साल का खर्चा अगर जो भी 30 लाख रुपया है घर का बेसिक खर्च इंक्लूडिंग EMI इफ यू हैव 30 लाख रुपया सेविंग बैंक में रखा लिक्विड फंड में रख दो बाकी का पूरा इक्विटी में डाल दो प्रोवाइडेड यू हैव पर्सनल एक्सीडेंट यू हैव इंश्योरेंस एंड यू हैव मेडिक्लेम. सेकंड थिंग है कि आप पूरा का पैसा इक्विटी में ही रखा करो जो दिन आएगा वो दिन बेच देने का. ये लिक्विडिटी है ना एक इट इज अ कॉस्ट. ये 30 लाख रुपया मैंने बैंक में रखा ना वो 6% पे रखा है टैक्सेबल. बेसिकली आई एम गिविंग 8% प्रीमियम टू कीप लिक्विडिटी इन माई माइंड. ये माइंड गेम है जो वन ऑफ द अंकल ही टॉट मी वॉट एवर स्मॉल थिंग्स आई नो इन माई लाइफ. ही वॉज अ जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन चार्ट अकाउंटेंट वेरी ऑनेस्ट गाय. ही हैज ओनली 2 अकाउंट्स. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी की अकाउंट PPF की अकाउंट और दूसरा स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट. टिल एज ऑफ 18 ही वाज बाइंग म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स. ठीक है क्या जरूरत है. सी वेरी वाज रिटायर इन मुंबई व्हेन आई वाज इन मुंबई तो वाइफ बोलती है पेडर रोड पे रहते हैं फ्लैट का कुछ करो भी. हस्बैंड को तो बोलता है देख आफ्टर 1 ईयर कंपनी विल अलाउ मी टू स्टे. अहमदाबाद मूव होना है पेडर रोड रहना है अंधेरी रहना है बोरीवली रहना है. आई विल sell my stocks and buy the apartment. Same thing I do. डर है अपने को मार्केट क्या होएगा 30% सस्ते में अपना पैसा बेचना पड़ेगा ना. सब तो नहीं बेचना पड़ेगा ना. वी शुड नेवर बोरो एंड इन्वेस्ट. ये 5 प्रिंसिपल बहुत सोच समझ के मैंने लिखे हुए हैं. यू नेवर रिग्रेट इन्वेस्टमेंट यू विल मेक टू मच ऑफ मनी. It's a privilege to have Ashish Shah sir addressing us. With his knowledge and wisdom, you might have learned a lot of things. I want to just supplement your knowledge with a few things. आप में से कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए. ये सिंपल सा सवाल है. जो नहीं बनना चाहते वो ऑलरेडी होंगे. सर आपने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया अपने तो सिंपल सा कैलकुलेशन है 15-15-15. आपने सुना है पहले कई लोगों ने सुना होगा शायद. 15 इज फॉर 15 ईयर्स 15 साल 15,000 रुपये महीना 15,000 पर मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स एंड इफ योर CAGR इज 15% यू विल बी अ करोड़पति. एज ईजी एज दैट टू रिमेंबर. 15,000 रुपये 15 ईयर्स 15,000 पर मंथ विद अ CAGR ऑफ 15% हम सब करोड़पति होंगे इंक्लूडिंग मी. एम आई क्लियर? वेरी सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. दूसरा एक सवाल आपने पूछा. वन ऑफ यू माइट हैव इंक्वायर्ड. ही सेड व्हाट इज योर पोर्टफोलियो. सो दिस इज ऑल आई हैव रेड समवेयर. दीज आर नॉट माई ओपिनियंस. सो द सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज how much of your portfolio should be in equities. Okay, so some guru has taught me this. If he is 18 years old. Okay, are you 18? Yeah. He is 18. My guess is right. So 100 minus 18 is 88. So his equity portfolio should be 88. Sir, 82. Sorry. What's your age, sir? 52. So 48%. 52 minus 100. Is it simple to remember? 48 should be his equity investment. Am I clear? No, I'm just giving them a benchmark This is a very, to understand. Very scientific thing. जो सब हाँ, बता yeah, रहे yeah. हैं ना, मतलब कियोसाकी ने There is a logic behind There is this. logic behind, yeah. When you are 18 years old, okay, you are investing for a very big horizon.
the number of years are in multiples, and your risk appetite is also on a very higher side. Am I clear? So that makes you to have a longer equity portfolio, which will generate lot of alpha for you in the longer term. बहुत सिंपल बातें बोली है मैंने दोनों आपको. सिंपल से 100 अपनी एज से माइनस कीजिए और आपका इक्विटी पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन कर सकते हैं. हम में से किसी ने कहा सेफ्टी कैसी है. आप में से कितने लोग हैं यहाँ जो बिजनेस में हैं? सर बिजनेस में हैं. मैं आपका नाम भूल रहा हूँ भाई साहब. ललित जी. ललित जी मेरे दोस्त हैं, हम लोग सुबह कभी कभी वॉक करते हैं. तो ललित जी ऐसा बताइए, आप बिजनेस में हैं और आप किसी को गुड सप्लाई करते हैं तो पैसा अगले दिन ही आ जाता है ना? 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन. और कितनी सर्टनिटी है आपको कि पैसा आ जाएगा? 50%, 60%, 100% तो नहीं हो सकती आपको. मुश्किल है, बिजनेस है ये. हाँ, वी हैव डेमोक्रेटाइज द मार्केट इन इट्स ट्रू वे. एक जमाना था जब एक रिंग हॉल में आपको अलाउ किया जाता था जाना, वही आदमी ट्रेड कर सकता था स्टॉक एक्सचेंज में. रिंग हॉल किसी ने फोटो देखा है सबने? उसके ऊपर एक बैच लगा होता था, ऑथराइज पर्सन या मेंबर. ही वॉज एंटाइटल्ड टू एंटर एंड ही वॉज ओनली एंटाइटल्ड टू ट्रेड. Right now, the market is democratized to such a way that you can trade directly into the exchange from your mobile. How many of you are doing it? Most of you. The market is democratized in the true way. Earlier, the rate at which it was transacted in the ring hall, nobody knew. तो उस जमाने में होता क्या था आशीष भाई? खरीदना है तो हाईएस्ट रेट, बेचना है तो लोएस्ट. Right now, nobody. The transparency is of that level that you can enter. How many of you have visited NSE website? If you are investing in stock market, at least for 1 hour or half an hour every week, you should invest your time in NSE website. There is a column for trade verification. Yes. Just punch your trade number and you will know the rate at which the transactions were transacted. The market is truly transparent. एक बात बताइए, आपने लास्ट शेयर कौन सा खरीदा सर? आपने कौन सा खरीदा? वाडीलाल खरीदा. आपको मालूम है किसने बेचा? आप में से किसी ने कोई शेयर बेचा है इन दिनों में? आपने कोई शेयर बेचा? NMDC बेचा. आपको मालूम है किसने खरीदा? मैं बता सकता हूँ, मुझे सब, इसलिए नहीं कि मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ. देयर इज ओनली वन बायर ऑफ NMDC व्हेन ही इज सेलिंग, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. देयर इज ओनली वन सेलर व्हेन ही इज बाइंग, दैट इज. पैसा किससे लेना है आपको? इससे ज़्यादा सेफ हो सकता है? मैं कह दूं चलिए आप श्रीनगर में जाइए, सुलेमान भाई से ले आइए आपका पैसा, लाइए आप जाके. नहीं मतलब आई एम नॉट सेइंग कि श्रीनगर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. तो कहाँ, इससे ज़्यादा सेफ्टी आपको क्या चाहिए? लास्ट 28, 26 ईयर्स नॉट अ सिंगल डे आपको ब्रोकर ने कहा कि आज NSE से पैसा नहीं आया, कल दे देंगे हम आपको भाई साहब, या स्टॉक नहीं आया अभी 15 दिन बाद आपका आ जाएगा आपके अकाउंट में. The system has been so designed and created that the investor safety is of an optimum level. मैं पहले भी कई लोग यहाँ पे रिपीटेड हैं, मैं उनसे वापस रिपीट कर रहा हूँ. इफ़ यू कीप अ डिपॉजिट इन योर बैंक, आशीष भाई कितना इंश्योरेंस है? 5 लाख आई थिंक. 5 लाख. सब लोग यही जानते हैं 5 लाख है ना? भले ही आपके मल्टीपल FDRs हो, कुछ भी हो, टोटल 5 लाख. टोटल 5 पान लाख. कार्ड से 5 लाख. पान कार्ड से 5 लाख. इफ सपोज आपके साथ गलत ये हो सकता है कि आपका ब्रोकर गायब हो गया. गायब हो गया. in that case, I won't call it an insurance, but the maximum claim NSE can approve is 25 lakh. तो आपको बायर का नाम बता दिया, आपको मैंने पेमेंट का श्योर कर दिया, 27 years का ट्रैक रिकॉर्ड है ना? It's very simple. अच्छा, okay, let us look at differently. How many of you are employed in a company or means are in service? Can I see some hands? Many of you. Okay, how many of you? The others are in business, I presume. Okay. आपका business pharmaceutical का है, आप काम करते हैं किसी कंपनी में. आज की तारीख में वेल्थ कहाँ क्रिएट हो रही है? If you do business, salary resources are limited. You may get into one business, but it is not possible for you to get into all the businesses. Equity market ही ऐसा mechanism है when you can
You can start a business in petrochemical, you can start a business in IT, you can start a business in textile, you can start a business in logistic, you can name the sector and you can be the owner of that business by purchasing just one share in a company. Am I clear? Very simple. जरूरी नहीं है नौकरी करने वाला बिजनेस नहीं कर रहा है. If he is into stock market, and he can invest in multiple sectors across the region and you can be the owner of the company. Things are very transparent. Leave apart some stray incidents, है ना, सब जगह होता है, कहाँ नहीं होता, है ना. और सर वो ओनर का और आपका रिटर्न सेम है. हाँ. That's the beauty. Things are very structured. What I'm trying to say, I'm trying to impress upon you, this is a very safe place to transact. If you make a mistake, then it is a different story altogether. थोड़ी देर पहले मुझसे सुना मैंने यहाँ पे कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी सर ने कहा, है ना. ऑल ऑफ अस बिलीव इन इंडियन ग्रोथ स्टोरी. 1992 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर, है ना. ही इनिशिएटेड लिबरलाइज्ड रिफॉर्म्स. मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा था 1992 में निफ्टी कितना था या 1993 में निफ्टी कितना था. It started with 1,000. The Sensex was something like 3,000, which is now 60,000. उस वक्त जो ग्रोथ कैपिटल मार्केट ने दिया आपको आज 20% CAGR, my reading tells me that we are on that verge of 1992 all over again. Correct. We are in that sort of a momentum which we were there in 1992. Things are incremental. We are already the 5th largest economy in the world. We are the fastest economy in the world as of now. We have the highest number of, and we can go on, highest number of working population. Everything is in place for India in a very structured way. So you need to work with a wealth expert. Okay? For you, आपके लिए पढ़ाई करना डिफ़िकल्ट है, आपके लिए अंडरस्टैंड करना हो सकता है आप उतना टाइम स्पेयर नहीं कर पाएँ. So SEBI has a mechanism of investment advisors and research analysts and our brokers also. Wealth First is one of them. You should seek advice from them and design your portfolio so that the wealth creation opportunity is at your doorstep. Am I clear on this? कोई चिंता की बात नहीं है ना, हम इंडिया में रहते हैं. और अगर आपने नहीं किया इन्वेस्टमेंट अब भी शुरू, या आपने अपना स्पीड अप नहीं किया, तो हो सकता है 50 साल बाद आपका ग्रैंडसन बोलेगा कि आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब वेल्थ क्रिएट हो रही थी इंडिया में. बिल्कुल. तो थिंग्स, मैं एक लाइटर वेन में ऐसा कहता हूँ कि गाड़ी चल चुकी है बोरीवली से, है ना, वो ऑलरेडी बांद्रा तक आ गई है. आपकी इच्छा है तो आप बांद्रा में बैठ के भी चर्च गेट जा सकते हैं, बट आप स्टेशन पे खड़े होते देखते रहे तो ये गाड़ी आगे निकल जाएगी. वंदे भारत ट्रेन है अभी फास्ट. दैट आई वोंट. तो थिंग्स आर इन राइट पर्सपेक्टिव. वी लुक फॉरवर्ड टू सिमिलर प्रोग्राम्स. आप में से कितने लोग हैं जो सेकेंड टाइम इस NSE के प्रोग्राम में आए हैं? लॉट ऑफ यू. देयर इज अ फैसिलिटी इन AMA वेयर वी कैन होस्ट अप टू 400 पीपल, आशीष भाई, एंड our dream is to have 400 audience in a hall, but at this point of time 150 people हैं, मुझे ऐसा बताया, मुझे भी ऐसा लग रहा है. तो गुजरातियों का एक बहुत टिपिकल अच्छी चीज़ है जो मैंने पिछले 8 साल से 8 साल से मुझे गुजरात में रहते हुए रियलाइज़ की है कि अगर कोई गुजराती अच्छी बात सुनता है ना, काम की बात सुनता है, 15, 80, 100, है ना, अच्छी बात सुनता है, तो वो कम से कम 10 लोगों को बताता है कि बॉस आज ना हम नॉर्थ इंडियन सेल्फिश हैं, हम किसी को नहीं बताते. तो आपने अगर आशीष भाई से कोई भी अच्छी बात सुनी हो तो आप मिनिमम 10 लोगों को बताइए. हमारा पर्पस, हमारा मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा. मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं 1500 लोगों से बात कर रहा हूँ आशीष भाई. 150 into 10. करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. Now we will take few questions selectively if somebody has. Yeah, please. આપણે આજે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ, અલગ અલગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, પણ તમે એમના પોર્ટફોલિયો જોશો તો બધાની અંદર છે ને HDFC કે ICICI બેંક કે બધી કોમન જ હોય છે. સર આમાં છે ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં સેબી ઓલ્સો હેઝ ડન અ કેટેગરાઇઝેશન, લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ. એટલે
વોટ ઇઝ લાર્જ કેપ મીન્સ ટોપ 100 સ્ટોક્સમાં જ ઇન્વેસ્ટ એને કરવાનું. મિડ કેપ મીન્સ 101 થી 250 સ્ટોક્સની અંદર જ એને 65% પૈસા રોકવા પડે. અધર્સ આર સ્મોલ કેપ. એટલે યુ હેવ ટુ ક્રિએટ અ રિઝનેબલી ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો કે ભાઈ વન ફંડ લાર્જ કેપમાં ઇન્ડેક્સ લો તમે અથવા લાર્જ કેપ ફંડ લો, then another 2 or 3 you can have mid cap and small cap. If you ask me unwanted advice, small cap is a better place to get expertise of the juice is there. Because there are 1500 companies. એમાં પોર્ટફોલિયો ઓવરલેપ નહીં થાય. But your question is right કે એક જ સરખા લાર્જ કેપ ફંડમાં 70% પોર્ટફોલિયો કોમન હશે. But you require to differentiate, na? Take somebody's guidance. No, sir, ETF is a favorite subject I can talk for. See, ETF also, you have to buy which ETF you are buying. One is a Nifty based ETF, Nifty 50. This is the most common track ETF. Then you have mid cap ETF. Then you have I think small cap ETF, mid cap 150 share. Mid cap ETF. There are a lot of sectoral ETFs are there. Like which ETF also you are buying is very, very important. Nifty 50 is the best. તો સારું ને बैंक ETF છે. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा. ETF की बात हुई इसलिए आप में से कितने लोग हैं जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सब लोग करना चाहते हैं, है ना? निफ्टी में जो स्क्रिप्ट अच्छी होती है वो आ जाती है, जो गलत नहीं कहूँगा, जो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं करती है वो बाहर आ जाती है ऑटोमेटिक. आप हर सेक्टर का समावेश है. 16% बैंक, 30% IT, सब आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइंड है. भाई साहब ने बताया, आशीष भाई ने, कि 20% CAGR है. तो निफ्टी की डिलीवरी आप अपने, निफ्टी नाम का कोई स्क्रिप्ट ट्रेड होता है? नहीं ट्रेड होता. आप निफ्टी की डिलीवरी अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं बाय परचेजिंग एन ETF. अब बात ये होती है कि यार कितना रुपए लगाएंगे. एक रिलायंस लेंगे, एक इन्फोसिस लेंगे, एक TCS लेंगे, तो करीब 70-80 हज़ार रुपये लग जाएगा आपका, जो शायद हो सकता है हमारे कई यंगस्टर्स के पास एट अ टाइम नहीं हो. तो और उसके बाद भी वो एक शेयर के चक्कर में पोर्टफोलियो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अलोकेशन 16% का है वो कुछ और हो जाएगा. यहाँ पे आपके लिए निफ्टी ETF है जिसकी डीमैट डिलीवरी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाती है और इसका भाव 180 रुपीज़ है. 180 रुपीज़ का एक यूनिट है. 180 रुपये तो आप सब समझ रहे हैं. So by investing 180 rupees, you are invested in top 50 companies across the Indian listed space. इससे बेटर क्या हो सकता है आपके लिए? It is 75% of the market, huh? हाँ. And whatever it is, sir. Yeah. Price, today's price, maybe. हाँ, मतलब आज का जो प्राइस है उसके हिसाब से बताया मैंने 180 आपको इसलिए बताया कि 18,000 का निफ्टी है तो प्रोपोर्शनेटली 180 होगा. बट सर ने बिल्कुल सही कहा 195 है. इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ 180 और 195. You are designing an auto-created portfolio where top 50 stocks of the country are forming a part of a group. ETF is given worldwide. इंडिया में मार्केट ETF का छोटा है, बट वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द US people invest only in ETF, not in direct equity, because investing in, there are multiple ETFs. You can go to our website and see for multiple. आप में से कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को और समझना चाहते हैं? तो देखिए मैं एक और एडवाइस देता हूँ आशीष भाई, इसी जेनरिक एडवाइस. बोलिए प्लीज. मैंने अपनी जर्नी शुरू की स्टॉक मार्केट की 2007 में. तो मुझे ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने एडवाइस किया कि आशीष 2 पेपर लो, इकोनॉमिक टाइम्स और उस वक्त फाइनेंशियल एक्सप्रेस आता था, और उसकी हेडलाइन पढ़ना चालू करो. मैंने ईमानदारी से हेडलाइन पढ़ी, तभी भी 5 मिनट में मैं पढ़ लेता था हेडलाइन. तो मैंने ऐसा 2-3 महीने में पढ़ा तो आई वॉज अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. क्या था. थोड़े दिन बाद फिर वो भाई साहब मिले, बोले आशीष एक काम करो, आप फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ना चालू करो ब्रॉडर हेडलाइन का. फर्स्ट पैराग्राफ, न्यूज़ भले ही 5 पैराग्राफ की हो, बट आपको फर्स्ट पढ़ना है. तो मैंने पढ़ना चालू किया. You won't believe, first paragraph पढ़ने से भी I could talk about any sector. I was aware about everything. It took me not more than 25-30 minutes to read the first paragraph. And I could talk about cement sector like anything. What is happening, where it is happening. कुछ भी मेरे को आप कोई भी फोरम में खड़ा कर लो मैं. So my request would be, I am not naming any paper, you all understand. Financial newspaper सब्सक्राइब कीजिए अपने मोबाइल पे, आईपैड पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे. रिलीजियसली आप 1 महीने पढ़ते हैं अगर हेडलाइन, है ना,
और अगले महीने से 2 महीने पढ़ते हैं अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ, तो यू विल बी ऑन द डायस स्पीकिंग टू द Exactly. ऑडियंस. You will be on the dais. थैंक यू. Good one. Sir, as an investor, what things fundamentally do you look for in stock? Like P ratio થઈ ગયો કે what do you as an investor look in a stock before buying it? Individual stock buying. Individual stock. So many things are there. It requires a whole. See, it is so simple, then everybody become rich. Basically, promoter pedigree, sector growth, and the fundamental like balance sheet you have to study. What is the book value? What is the price earning? What is the earnings growth? There are lot, you compare the stock in a screener in a computer with other peer group. You will come to know whether cheaper or expensive something like. It's a very big thing to value, and nobody knows the real value. ठीक है, please. Yep. I think is a very pertinent question, और half of the answer आशीष जी ने दे दिया आपको ETF की स्टोरी बता के. And he told me, he said also that 50% of the US market is the ETF market. Because see, day by day it is becoming very difficult to beat the indices. Very difficult because आपने जो बताया ना, all are same portfolio. So everybody is suppose buying HDFC, ICICI or something, तो सबका rate return सब आएगा. But active also, you see, that's why your portfolio should have an active management fund. You should have a passive management fund. Large cap, I will go and buy index fund, that's why I said. But small cap, where the fund manager's brain, there is expertise, research is required, juice, then you go for active management fund, find the portfolio manager, how he's working and all. That is the way I structure my portfolio. But it's going to be difficult. Let me answer is, તમારું observation 100% સાચું છે. ETF is the, કદાચ 10 વર્ષ પછી 90% પોર્ટફોલિયો ETF માં હશે. आप में से कितने लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स? So the next topic that we will have is fundamental analysis. We will send you an invite. Hello. Yeah, sir, I have a question for you, Ashish bhai. As he discussed about the passive funds, I was just studying a fund called Nifty 50 Value 20 Fund. I have seen the returns were fabulous, but nobody has asked me ever to invest into it. I just found it myself, and I tried investing into it, and I'm seeing it can give results. I want to have your opinion on the same. See, there are 50, I think 2,000 funds in India total. And there are a lot of passive funds are also is there. In passive, there is one momentum 50. Then another momentum down 150. So many, see the packaging. You have to make a packet. Now you have to study it. You have to read it. Then you have to align with your thought process. The answer is in 99% time, we just follow the past returns and invest. See, the rear side view is a problem. But you have to understand why this fund has given me fantastic return. Why this fund has not given, you have to compare the funds with a couple of time zones. See, to select a fund also is a fundamental research. Like momentum in 2021, all the momentum 50 or momentum 100 funds did amazing job. Today, value is doing good. Because globally, the growth story is dying and value story is coming up. That's why value is doing good. When the interest rate cycle goes up, generally value stocks does better than the growth stock. But that you will come to know today only, not 6 months before. उसके बाद ETF और इंडेक्स फंड का प्रचार प्रसार बढ़ गया और बफेट साहब ने भी उसको सब्सिट्यूट किया, ठीक है. लेकिन अगर सब लोग ETF में जाएंगे तो ETF तो लिमिटेड है उसका सर, तो वो इन्फ्लेट होगा, ठीक है. और जो बाद में जो आएंगे वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे सपोज ETF कर देंगे, तो अगर वो लॉन्ग हराइजन में नहीं है, सपोज 20 इयर्स और मोर देन 15-20 इयर्स, तो इन्फ्लेटेड प्राइस में वो घुस जाएंगे लेकिन वो निकल फिर नहीं पाएंगे. तो सर इसमें आपका क्या सोच? नहीं, देखिए, ये तो मार्केट है.
HDFC बैंक आशीष भाई ने 100 में ख़रीदा था, है ना, मैंने 500 में ख़रीदा, भाई साहब ने 1000 में ख़रीदा, मैडम ने 1900 में ख़रीदा, है ना. इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्ट. ऐसा नहीं कि इनको 1900 के बाद कोई फ्यूचर नहीं है, है ना. इसके बाद बोनसेस हैं, डिविड. तो सर सारे ऐसे ही बनते हैं ना. नहीं, ऐसा नहीं है. निफ्टी की बास्केट बहुत बड़ी है. आपका और मेरा इन्वेस्टमेंट अभी होराइजन बहुत अलग है. हम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं. अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो प्रिपेयर्ड है, जिसके पास स्टडी है, अगर वो आपको जैसे किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू रूट करना है, तो ETF इज़ नॉट द ओनली ऑल्टरनेटिव. मेरा कहने का मतलब था ETF में अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो 10 to 20% आप पार्क कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ द फोलियो, इफ़ यू आर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड और इफ़ यू हैव अ लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बी कोटक, बी HDFC, वॉट एवर इट इज़, है ना, आप उनमें भी कर सकते हैं. आई वॉज जस्ट सजेस्टिंग यू दैट इफ़ यू वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई, आई गॉट योर पॉइंट. यार कमिंग इनसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर ऐसा सोचेंगे तो आज HDFC बैंक किसी को नहीं खरीदना चाहिए, कोटक बैंक किसी को नहीं खरीदना चाहिए. सर जैसे मैंने देखा, जैसे मेरे कुछ दोस्त बाहर में रहते हैं, जैसे UK, लंदन में, तो वेनेवर तो उनको सेफ लगता है ETF. लेकिन ETF में मैं देख रहा हूँ कि सर इतना अभी यूएस में रिवर्स हो रहा है सर. यूएस में ETF का थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है. नहीं, ETF प्रोडक्ट है, ETF कोई स्टॉक नहीं है. मार्केट मतलब मार्केट है ETF अपने आप ETF में. मार्केट है, लेकिन सर उसमें जो पैसिव इन्वेस्टर जो जाना चाहते हैं ना, एक थोड़ा सा अभी रिवर्स ट्रेंड देखा जा रहा है. मैं ऐसे नहीं, वो मार्केट डाउन होगा. आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि सेंसेक्स जो हम देखते हैं अभी कितना है, 61. कितने लोग बिलीव करते हैं कि आने वाले समय में 1 लाख हो जाएगा? सभी लोग करने लग जाते हैं तो. और कितना 18,000 का निफ्टी है, कितने लोग सोचते हैं कि आने वाले सालों में 50,000 का हो जाएगा? तो अश्योर्ड रहिए, अगर आप 50,000 सोचते हैं निफ्टी के लिए आगने वाले 10 साल में भी, है ना, तो आपका ETF 195 का सर ने बताया, वो भी 500 रुपये हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली. एम आई क्लियर? डायरेक्ट लिंक विथ इंडेक्स है ये फंड. मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन. हाँ प्लीज सर को. हाँ पूछिए ना आप. आपकी परमिशन से मैं आप बात कर सकता नहीं, आप वहीं से कीजिए, अभी हमको इतना टाइम नहीं बचा इतना कि हम. अच्छा। हाँ. मैं आशीष भाई, गिरिराज दवे और आप आशीष गोयल जी का हाँ जी. बहुत बहुत अरे, thank you, sir, नमस्कार thank you. करता हूँ. हाँ जी. आप सब ज्ञानी लोग हैं. अभी मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो जैसे आपने 15 बोला, हाँ जी. वो लेकिन हमारे केस में नहीं हुआ है. हमारी गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी है. मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ. मैं एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता था. उसमें मुझे एक अच्छा एक कॉर्पोरस मिला. उसमें पेंशन इतना ज़्यादा नहीं है. अभी मेरी 62 ईयर्स एज है. अभी 62 ईयर एज में मैं ज़्यादा रिस्क तो ले नहीं सकता, और कितना मेरा लाइफ है वो भी मुझे पता नहीं है. तो अभी मैंने जो देखा है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं ये शेयर अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. लोगों बातों की टिप्स से, ये टिप्स से खरीद करते हैं. एक्चुअली अभी क्या करना चाहिए, मतलब शॉर्ट होराइजन में और अच्छा रिटर्न पाने के लिए? सी एक चीज है, यू आर रिटायर्ड 62. मतलब अभी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते. एग्रीड. तो कभी किसी को मिलके या आप हमारे भी कलीग को मिल सकते हो. थोड़े पैसे सेफ्टी में रखने चाहिए और थोड़े आप ETF निफ्टी का ले लो, बहुत हो गया. हाँ, लाइफ इज गुड. 7% आपको फिक्स इनकम 7-8% मिलेगा. निफ्टी में आपको 12-13% मिनिमम मिलेगा रिटर्न 3-4 साल का. सर 38 तो आप बोल रहे हो कि 100 का क्या फॉर्मूला, तो 100 कौन जीता है इस नहीं, जमाने में? ये तो सर फॉर्मूला बताइए सर, ऐसा नहीं है. अभी प्रैक्टिकली तो 65-70 तो बहुत हो गया ये जमाने में. 85 पक्का याद लिख के मेरे बुलाया ना. आपका समझने में फ़र्क रहा. मैंने ये कहा अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं तो 38,000 आप इक्विटी में लगाएंगे, हाँ. 62,000 आप फिक्स इनकम में लगाएंगे, ऐसा समझाया था. हाँ. मैं 100 बोलता हूँ तो एज नहीं बोलता हूँ मैं आपको. हाँ. मैं एक समझाने की कोशिश Percentage. कर रहा था कि आपका 38% ही इक्विटी में आना चाहिए, 62% आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में, बॉन्ड्स में, इनमें होना चाहिए आपका. मतलब मान लीजिए मेरे पास 50 लाख है. नहीं, अपन छोटे अमाउंट की बात करें तो समझ में एक इजीली एग्जांपल देता हूँ, छोटे जो हाँ, भी. हाँ. तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब? नहीं, मैंने क्या कहा आपसे, आपको ना सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र की लिस्ट है सेबी पे, साहब भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं.
मैं इनसे उनका ग्रुप का ही मेंबर हूँ। हाँ उनसे विजिट करके उनसे समझना चाहिए इसमें भी आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, आपका मेडिक्लेम कैसा है, आपका इंश्योरेंस कैसा है, आप पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, हाँ। आप फाइनेंशियल, ये समझना होगा पूरी तरह बैठ के। आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत हम भी हेल्प कर सकते हैं, बट एनएससी के ऑफिशियल्स राइट नहीं है इस चीज़ के लिए। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके आपकी जर्नी प्लान करनी चाहिए। अच्छा, है ना जी? थैंक यू। थैंक यू। तो आपने जवाब नहीं दिया, कितने परसेंटेज इन्वेस्ट नहीं, आपकी प्रोफाइल स्टडी करना पड़ेगा, आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं वो स्टडी करना पड़ेगा, आपके पास और रियल एस्टेट एसेट्स कितने हैं वो सब आप कंपाइल करेंगे, तब आप असेसमेंट कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। And thank you, all participants. I request Mr. Ashish Goel to give vote of thanks. Thank you, Ashish bhai, and it was a privilege listening to you. And we have lot of respect for our member and friend Ashish bhai. And thank you all for joining this. We will be having 2 more programs. Okay, not this month, in the next month, Johnson. Next month we have 2 more programs lined up. So please do attend NSC programs. We will bring in incremental thing. And as I have promised, we will be doing a program on fundamental analysis. Next time we have a special program designed on the Women's Day, just next to the Women's Days, specially targeting at ladies and young girls. So we would like you to communicate the message and be there at the program. Thank you.